जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री। आज बहुत दिन परे आमर क्लास हो पारला लाइव क्लास। कारण मु सत कथा कह गले मु मॉर्निंग रू उठी पार नथली बहुत दिन है। पिला मानकर बहुत रिक्वेस्ट थिला सर मॉर्निंग क्लास करंतु। मु शेड्यूल करथिली बट क्लास करि पार नथली। एटा ही होतिला रेगुलरली माने क्लास शेड्यूल होतिला बट क्लास वाज नॉट गोइंग थ्रू। पिला माने बहुत रिक्वेस्ट करथिले सर क्लास करंतु मु चेष्टा करथिली किंतु बेले बेले उठी पार नथली। दैट वाज माय इश्यू। ओके सो समस्त आसवे जाए मु क्लास को प्रथम रिवाइज करनी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग COH ग्रुप आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कंपाउंड रे COH ग्रुप रहिबो ताको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कहू। ठीक अछि। एंड देन योर SCOH मिथानोइक एसिड बा फॉर्मिक एसिड। CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड और यार आईपैक नेम होची इथानोइक एसिड। वेरी गुड मॉर्निंग त्रिशा। I am very fortunate that after such so many hurdles you have attending the class. Thank you again. कारण मु जनरली मॉर्निंग रे क्लास शेड्यूल करूथिली क्लास करि पार नथली। आउ तार मेन रीजन है मु लेट नाइट रे टिके सोउथली। आउ लेट नाइट रे मेन रीजन है क्लास गोड़ाई थाउची सो सबुडा काम सरू सरू लेट नाइट ही हो जाउथला। मॉर्निंग उठी पार नथली बहुत दिन है बट फॉर्चुनेटली आज मु उठिबारे आज 6टा बेले मु उठी पड़े प्राय 5:30 6टा बेले उठी पड़े जनरली। तो आज मु क्लास नेबा को सक्षम हो पारली। प्रणाम साई। ओके सो C2H5COH माने प्रोपानोइक एसिड which is common name that is propionic acid. Then C3H7COH butanoic acid which is common name N-butyric acid. C4H9COH pentanoic acid which is common name N-valeric acid. C5H11COH hexanoic acid and caproic acid. बढ़िया ना गुड़ाक मन रहा निहाती दरकार common name. COH ethane dioic acid or which is common name known as oxalic acid. COH CH2O4COH hexane dioic acid which is common name succinic acid. Next COH CH2COH propane dioic acid. It is known as malonic acid. एटा बहुत इंपोर्टेंट देख समस्ते जे दुईटा COH ग्रुप रही थिले जदि हमर दुईटा COH ग्रुप रही वी विल कॉल इट एज दुईटा COH ग्रुप रहिले हमें ताको ऑक्सैलिक एसिड कहबा। टोटल दुईटा COH ग्रुप रही ता सहित मझिरे CH2 चारटा रही ताले ताको सक्सिनिक एसिड कहआ जिवो। CH2 ग्रुप गोटे रही आ दुई पटे दुईटा COH रही मालोनिक एसिड। मन रहा ना मालोनिक एसिड केमती हम ना CH2 दीपटे दुटा COH ग्रुप रोटा कि आम कह प्रोपेन डायोइक एसिड मालोनिक एसिड आउटा हेक्सेन डायोइक एसिड सक्सिनिक एसिड आउ इथान डायोइक एसिड ऑक्सैलिक एसिड। जदि तुम या मन रखार अच्छी आई एम सेइंग ए ट्रिक so that you may not get confused regarding the common name of these three. That is EOCHMP. EOCHMP বা
executive officer executive officer executive officer then common health issue ପାଇଁ ଏମ୍ପିରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କମନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏମ୍ପିରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଇଓ। ଓକେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମିନ୍ସ ଇଓ। ଇ ମିନ୍ସ ଇଥେନ୍ ଡାଇଓଇକ୍ ଏସିଡ୍, ଓ ମିନ୍ସ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। କମନ୍ ସି ମିନ୍ସ your sorry H means hexandioic acid, S means succinic acid। ठीक अच्छे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ इश्यू H रे hexandioic acid, S रे succinic acid, देन MP M होची तुम्हारा malonic acid, P होची propanedioic acid। You can remember by this or you can remember by own। okay, तापर से अनुसार ऑनलाइन आस्तिला IUPAC name and IUPAC name is different that you know it better, but somehow एठी गोटे IUPAC name रहितिला which is quite interesting like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 थिला। so 8 पोर्शन रे गोटे कार्बोक्सी ग्रुप थिला माने हमरो COH ग्रुप थिला। तापरे 5 पोर्शन रे गोटे CH3COH ग्रुप थिला। so it is known as 5 carboxy methyl 8 carboxy non 2,4 diene 1N dioic acid। एडा हम नन्ना, ठीक अच्छे, एडा हिजो नन्ना नॉट नॉन, नन्ना हबो बिकॉज एटे डी अछि ना कॉन्सोनेंट लेटर, सो एटे ए हबो, नन्ना हबो। मु टिके लिखि भूली जाइतला, दिस इज नन्ना 2,4 diene 1,9 dioic acid। से अनुसार आम देखते COH गोटे रही बेंजोइक एसिड, सालिसिलिक एसिड, आंथ्रानिलेनिक एसिड, थालिक एसिड, आइसोथालिक एसिड, सिनामिक एसिड, टर्फथालिक एसिड। जस्ट एतिकी मन रखियो कौन तुम COH ग्रुप रही सालिसिलिक एसिड, देन 1,2 डाइओइक एसिड रही थालिक एसिड, 1,3 रही आइसो जोड़ा कि मेटा, पारा रही टार थालिक एसिड। गुड़ाक किसी कॉमन नेम थिला, सॉरी आईपैक नेम। 17 नंबर क्वाइट इंटरेस्टिंग थिला देखिबा। एटा तमरो कोन थिला 2 इथाइल ऑक्सो, 2 इथाइल ऑक्सो कारण एटा दीटा अलगा साइड ग्रुप हो जाउची। तापरे बेंजोइक एसिड 2 इथाइल ऑक्सो बेंजोइक एसिड। ठीक अछि, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सेंदी 16 नंबर जो देखिबा 3 ऑक्सो 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। एटा भी थिला 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। तापर आइसोमरिज्म देखले चेन आइसोमरिज्म जेतबेले कोन रहउची ना तुमरो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहउची बट कोन होची COH रा पोजीशन अलगा अलगा आसिले दिस इज नोन एज योर चेन आइसोमरिज्म। से अनुसार हमें डिफरेंट डिफरेंट करथिले फंक्शनल आइसोमरिज्म कोन ना जेतबेले COH ग्रुप व्हेन यू विल फाइंड COH ग्रुप
ता सहित किछि किछि जगह तुम देखिबो ईस्टर रही CH3CO CH3OCOH ठीक अछि ester group also RCO RS so it is also an example of functional isomerism so hame koi pariba that uh, ester group is functionally isomer with carboxylic acid position isomerism रे तुमरो ए भलिया अलगा अलगा पोजीशन रे जेतबेले लागिवो कार्बोक्सिलिक एसिड इन द एरोमेटिक रिंग ताको हमें कहबा पोजीशन आइसोमरिज्म इवेन एठी भी तुमे देखि पारछो जे COH एक रे अटैक हेतिबा बेले परवर्ती मुहूर्त रे OH भी से अनुसार 2 रे थिला एठी OH भी कोन हेला OH2 गासिला so it is somehow भूल हे जाइछि नेमिंग दा 1 2 3 हबो ओके सॉरी नेमिंग डाटा 3 हबो so it is 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड हबो ठीक अछि 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड आ एटा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड 2 पोर्शन रे OH रहिछि so it is 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड it is 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड श्रावणी वेरी गुड मॉर्निंग बहुत दिन पर मु क्लास करूछि ऑनलाइन रे thank you for your being patience towards this class thank you again एठी किछिटा करेक्शन करि नबो ठीक अछि ए जगह रे करेक्शन करनबो इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इट इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड नेमिंग कला बेले टिके भूल हे देथिला फर्दर एटा 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और ठीक अछि से अनुसार एटा 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड जस्ट पोजीशन चेंज होतिला next how can you prepare carboxylic acid from alcohol aldehyde and ketone by means of oxidation using acidified K2Cr27 or KMnO4 तो प्राइमरी अल्कोहल थैंक यू श्रावणी बहुत दिन है मॉर्निंग उठी पार नी सत कथा कह गले मु राति शोला बेले 12टा गोटे 2टा इवेन 2टा अधे भी हो जाए बेले बेले तो मॉर्निंग एते जल्दी उठी पार नथिली चेष्टा करी एथर मॉर्निंग जल्दी पुणी उठापी जल्दी शोई गले जल्दी उठी पारि आ क्लास तुम मानवर नहीं पारि ठीक अच्छे किछि दिन मत टिके सफर हवा को पड़ो आउ थे मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी कमिंग वीक रे हो जाऊँ देखा जाओ ये चैप्टरटा सारी दवा जिते जल्दी हम सो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले अल्डिहाइड पाइबा अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन कले हमें वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले वी विल गेट कीटोन कीटोन को फर्दर ऑक्सीडेशन कले वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड सेमती अल्काइल सियानाइड को आम जो हाइड्रोलिसिस करवा वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड इंपोर्टेंट ईस्टर को भी हाइड्रोलिसिस कले कार्बोक्सिलिक एसिड मन रख मेकानिजम रे ईस्टर रे मेकानिजम रे प्रथमे H+ ऐड हबो तापर OH- टा को पाखे अटैक करिवो ना C+ पाखे अटैक करिवो ठीक अछि व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट H+ विल बी अटैक्ड एट कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड OH- विल बी अटैक्ड एट कार्बोनिल कार्बन वेरी गुड मॉर्निंग संजय and ultimately we will get the compound that is RCOH plus RDSOH from acid chloride also acid chloride को hydrolysis कले भी हमें से भलिया carboxylic acid and corresponding acid पाए mineral acid that is your HCl पाई जिबा acid amide को hydrolysis कले carboxylic acid and ammonia पाई जिबा एठी भी गोटे पिला माने भूल अछि नेमिंग रे दैट 2 मिथाइल हेक्सानामाइड हे जिछि दिस इज 4 मिथाइल हबो 1 2 3 4 4 मिथाइल हेक्सानामाइड हबो मो 2 मिथाइल कर देछि आ केतरा क्लास जदी कहबो मो 2-3 दिन रे सार देबी चैप्टर टा जल्दी सार जीवो
एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलिसिस कले भी आमर ये कंपाउंड पाइबा when एसिड एनहाइड्राइड बहुत जल्दी सरजिव जदि विथिन मो 8 तारिख एटू बाहर जाउची सो 7 तारिख मोर लास्ट क्लास रहिबो आज 4 तारिख 4 5 6 7 4 दिन रे मो सारी देबी चैप्टर टा को जेमति हेले ट्राई करबी 4 दिन रे आज एसिडिटी पढ़ी देबी 4 दिन रे सार देले तुमरो रिएक्शन पार्ट बहुत कम अछि यार ठीक अछि यार रिएक्शन पार्ट बहुत कम रही 4 दिन रे ए चैप्टर टा सारी देबी माने 7 तारिख 7 तारिख लास्ट रहिबो कार्बोक्सिलिक एसिड रो क्लास एस्टरिफिकेशन यस त्रिशा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को एस्टरिफिकेशन एवं ईस्टर रो हाइड्रोलिसिस को सापोनिफिकेशन कहंती ठीक अछि देन एनहाइड्राइड को हमें हाइड्रोलिसिस कले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाउथले ट्राइक्लोरो अल्केन को बा ट्राई हालो अल्केन को फर्दर हाइड्रोलिसिस कले विथ बेस हाइड्रोलिसिस इंपोर्टेंट ट्राइक्लोरो अल्केन जोटा रहिबो बेस हाइड्रोलिसिस किंतु या आग गुडा सब गुडा एसिड हाइड्रोलिसिस या सब एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड एसिड अमाइड ए सब होची तुम्हारा एसिड हाइड्रोलिसिस बट समहाउ ट्राइक्लोरो अल्केन रो हमें जेतोले हाइड्रोलिसिस करबा वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय मींस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस Grignard's reagent very important. Grignard's reagent react with carbon dioxide to produce a addition product which upon hydrolysis produces carboxylic acid. Then from toluene you can get benzoic acid by means of Itard's reaction. So toluene is oxidized to corresponding COOK which upon hydrolysis give rise to benzoic acid. This is also known as Itard's reaction. ठीक है जेमती तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड पाइथिले एडे बेंजोइक एसिड भी सेमती CH2R रही so for the we are getting benzoic acid orthoxylene को further oxidation कले we are getting phthalic acid yes they are the substitution groups of toluene and we had discussed so many questions related to carboxylic acid in the last classes. Then physical property which all these members all are generally colorless liquids having pungent smell but up to 3 member and after 4th to 6th member they are oily liquids with unpleasant odor and higher members are colorless as well as odorless and these are waxy like solids wax bhali lagibo our solubility dekhiba jodi it is highly soluble in water due to formation of hydrogen bond but as the size increases the solubility also decreases due to its steric effect or steric hindrance. Next melting point more the number of carbon atoms more will be melting point but even number सब melting point odd number रो कम रहबो nearest odd number this is due to the reason that because हमें reason कहि परिबा that even number रे तुम्हारा symmetrical structure होथिबा जगो fit the crystal lattice whereas odd रे unsymmetrical रहिबा जगो they do not fit the crystal lattice odorless माने smell नहीं ना smell जमा नहीं तारो बॉइलिंग पॉइंट फर्दर जदि हम देखिबा कार्बोक्सिलिक एसिड रो मेल्टिंग पॉइंट कॉरेस्पोंडिंग अल्कोहल एल्डिहाइड रो अधिक रहबो बॉइलिंग पॉइंट सेमती मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट बट हियर इट विल बी बॉइलिंग पॉइंट मोर किछि किछि जगह रे क्लास कला बेले भूल हो जाइछि डाकिला बेले लिखिला बेले बॉइलिंग पॉइंट मेक इट करेक्शन एज बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और एल्डिहाइड टू यार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम ड्यू टू इट्स डाइमरिक स्ट्रक्चर किंतु अन्य मानकर केवल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड होतिला एठी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एट ए टाइम दीटा कार्बोक्सिलिक एसिड भितर होछि सो यू कैन से दिस इज द crystal fitting structure. Chemical properties of carboxylic acid, acid strength जदि हम देखिबा
dissociation it will start to dissociate into corresponding carboxylate ion as well as proton, and the carboxylate ion is basically getting resonance stabilized. You can see the resonating structures of carboxylate ion. So pK value gives the expression for acidic strength, and more the pK, less will be the acidic strength, and accordingly what is K acidic dissociation constant, that is Kf by Kb, that is your forward reaction rate constant divided by backward reaction rate constant. In forward reaction rate constant, which is directly proportional to the rate of concentration of RCO minus and H3O plus. In backward, it is directly proportional to concentration of RCOH. Further comparison of acidic strength with alcohol, carboxylic acid has higher acidic strength than alcohol due to formation of stable carboxylate ion, but in case of alkoxide ion, no resonance stabilization is getting. So the carboxylate ion is getting more stabilized, whereas alkoxide ion is getting less stabilized. What an interesting question thila. An organic compound having molecular formula CH4O upon oxidation produces compound B. Compound B can undergo kinase reaction. Compound B upon further oxidation in presence of KMnO4 will produce compound C. Identify A, B, C. Also arrange them in the increasing order of boiling point. Quite interesting question. A होची गोटे compound जार molecular formula होची CH4O. Let me highlight the parts. ठीक है, ए को हमें ऑक्सीडेशन कले बी दौला, बी को पुणी बी के पुणी कैनेजर रिएक्शन जीव, और बी फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 कले कंपाउंड सी दौला ऑक्सीडेशन कले, और ये ABC आइडेंटिफाई करवा. ताले एठू बी ऊपर गोटे धारणा मिल जाउची हमको दैट बी मे बी ए aldehyde group, मे बी एन aldehyde group containing no alpha hydrogen atom. So B होची गोटे aldehyde group containing no alpha hydrogen atom. कारण केवल aldehyde group containing no alpha hydrogen atom will undergo कानिजर रिएक्शन. अल्फा हाइड्रोजन एटम नथिबो सी ही कानिजर रिएक्शन दबो. ठीक अछि, ताले हमें कंपाउंड ए को कौन कले ऑक्सीडेशन कले कंपाउंड बी दबो. कंपाउंड ए इज CH4O which upon oxidation gives compound B. ताहले कहा को ऑक्सीडेशन कले हमें अल्डिहाइड पाइबा. obviously it will be alcohol, that is primary alcohol. So it compound A must be an primary alcohol. Compound A must be a 1 degree alcohol. नहले हमें केबे भी हेले अल्डिहाइड पाइबानी, कारण ऑक्सीडेशन करूचे हमें गोटे कंपाउंड को, सेठू हमें कंपाउंड बी पाउचे, दैट इज योर अल्डिहाइड containing no alpha hydrogen atom. So aldehyde हमें पाउचे ऑक्सीडेशन करिके कंपाउंड ए को, दैट मीन्स कंपाउंड ए इज एन अल्कोहल. ताहले हमें कौन करि परिबा, दैट एटा गोटे अल्कोहल हेथिबो, दैट टू प्राइमरी अल्कोहल. सो लेट इट पुट एज OH हे गला. एटा हमर फार्मूला थिला CH4O. very good, Trisha. CH3OH. so CH4O, that means it is CH3OH. CH3OH को ऑक्सीडेशन कले we are getting HCHO, formaldehyde. good morning Vibhu, very good morning Vibhu sir. good morning Jayant sir. they have qualified. okay, so SCHO formaldehyde upon oxidation, again formaldehyde
upon oxidation again produces a compound that is compound B. Compound B. Sorry. So HCHO upon oxidation in presence of KMnO4 will produce another compound that is HCOOH, that is carboxylic acid or formic acid. It is formic acid. Okay. So it have tomorrow formaldehyde, that is compound B, and this is formic acid, that is compound C. Very good, बहुत बढ़िया. तो वर्तमान जो आसुची दैट कंपाउंड ए बी सी आइडेंटिफाई हो गला. ए होची गोटे अल्कोहल दैट इज योर मिथानॉल. बी होची तुम्हारा कौन बी इज योर HCHO दैट इज फॉर्माल्डिहाइड एंड कंपाउंड सी होची तुम्हारा एग्जाम रे एपरी आसीबो क्वेश्चन. यस, एग्जाम रे एभलिया क्वेश्चन आसे त्रिशा. Compound C is formic acid, and quite interesting is that compound B undergo Cannizzaro reaction, and you have to mention the Cannizzaro reaction. So compound B undergoes Cannizzaro reaction. Compound B. So compound B undergoes Cannizzaro reaction. Compound B undergo Cannizzaro reaction. So what it को प्रकार प्रोडक्ट हो पारे. आउ ये भलिया क्वेश्चन बहुत आसे एग्जाम रे, एंड यू हैव टू बी स्टिक टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक अच्छे, कारण ऑर्गेनिक एमती गोटे पार्ट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर टू मोर. जिते टाइम मिलला ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करनवा दरकार. मु तो कहि मोर ऑर्गेनिक हुए ने, सत था ऑर्गेनिक हुए नहीं, मत फील हुए बेले बेले. HCHO ताकू जदि हमें Cannizzaro रिएक्शन रे हमें नहीं थिले, व्हाट इज द थिंग दैट इज concentrated NaOH. concentrated NaOH नेले we were getting SCONA, that is sodium formate plus CH3OH methanol, that is again compound A. So this is sodium formate methanol. So ये क्वेश्चन टाको आहरी भी डाटा दे पारन माने देले भी हे परिबो जे कंपाउंड बी अपन Cannizzaro रिएक्शन प्रोड्यूसेस कंपाउंड ए. कंपाउंड बी Cannizzaro रिएक्शन देवा द्वारा कंपाउंड ए प्रोड्यूस करछि. सो एटा हे जिवो. Okay, this is the Cannizzaro reaction part. Now we have to arrange them. What is we have to say what is A, what is B, what is C. So A is equal to your CH3OH, that is methanol. Therefore A is equal to CH3OH methanol. B is equal to your HCHO formaldehyde. तुमको ये भाया रिएक्शन करदेवा को पड़ो. ठीक अच्छे, ये भाया लिखिदेले चलो, कारण आपको जदि आउ तुम बेसी वार्डिंग दवा को जीव टाइम पड़ेबो. सो एति लिखिले भी मार्क मिल जिवो. डोंट वरी. SCOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड. C is equal to sodium formate. No, C is not sodium formate. In presence of KMnO4 will produce compound B. Compound B को oxidation कले पुणे उथरे compound C दबो. So C is only formic acid. Okay. So further यहाँ पर हमें एमान को arrange करिबा in the increasing order of melting point or boiling point. Boiling point. Boiling point रे हम देखचे जे कौन हवा ना तुम्हारा अधिकार रो अधिकार जिते
फॉर्मिक एसिड रो सबुठु अधिका बॉइलिंग पॉइंट रहइबो ड्यू टू इट्स डायमरिक स्ट्रक्चर तापर फॉर्माल्डिहाइड अल्डिहाइड तापर जाइके अल्कोहल कारण अल्डिहाइड रे कार्बन और ऑक्सीजन भितर पोलराइजेशन बहुत भल थाए सो सेठी तुमरो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिका थाए एज कंपेयर टू अल्कोहल सो जदि हमें याकू अरेंज करिबा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग कही से अनुसार देखा पड़ो इंक्रीजिंग ऑर्डर कही सो यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मु डिक्रीजिंग कहीदेली यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होची तुमरो कौन रहइबो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी a less than b less than c. You need not to write that CH3OH less than SCOH, SCHO less than SCOH, and highest boiling point will be of carboxylic acid due to its dimeric structure. Is it clear? ए क्वेश्चन टा बुझा पड़ला समस्त को तो ये हमें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विथ अल्कोहल देखते एसिडिक स्ट्रेंथ विथ अल्कोहल एक नंबर दुई नंबर आम देखा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ among substituted carboxylic acid among substituted carboxylic acid जो कार्बोक्सिलिक एसिड गुटाक सब्स्टिट्यूट होइछि बा सेथिरे किछि सब्स्टिट्यूशन हबो दैट मीन्स किछि ग्रुप सेठी ऐड हेतिबो राइट किछि ग्रुप अटैच हेतिबो सिंपली सो फास्ट हमें देखिबा या अंडर रे फास्ट देखिबा गोटे पार्ट दैट इज योर first question roche that on the basis of inductive effect on the basis of inductive effect inductive no inductive तो गोटे ही रहिबो या अंडर रे on the basis of plus effect wait या को लिखिबा किस दरकार नहीं जस्ट एठी गोटे पॉइंट लेख दैट more the plus I effect less will be acidic strength plus I effect जते अधिका हबो acidic strength सेते कमी जिवो H the electron cloud on carboxylic acid on COH group increases as the electron cloud on COH group increases which hinders the removal of H plus ion कौन तार वार्डिंग डम बुझुच which hinders the removal of H plus ion
दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट जिते बढ़िबो एसिडिक स्ट्रेंथ सेते कमिबो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो मोर द प्लस आई इफेक्ट लेस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं ना जदि आम कंपेयर करवा लेट्स कंपेयर बिटवीन टू कंपाउंड्स लेट्स कंपेयर बिटवीन टू कंपाउंड्स सेठी आम डिटेल्स रे बुझी परिबा सो राइट ए क्वेश्चन इज between yes between acetic acid and formic acid acetic acid and formic acid which one is more acidic which one is more acidic कहा का भीतर कहला acetic acid और formic acid भीतर which one is more acidic acid प्रथम हम देखिबा acetic acid acetic acid माने CH3 COOH formic acid माने HCOOH देखो पिला माने CH3 ग्रुप थिबा जोगु इट हैज इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप थिबा जोगु यार प्लस आई इफेक्ट अधिका प्लस आई इफेक्ट और वी कैन से plus I group is present in acetic acid whereas there is no plus I group present in formic acid. So ये कौन करिवो plus I group थिबा जोगु CH3 ग्रुप कौन करिवो इलेक्ट्रॉन को पंप करिवो टुवर्ड्स COH जा द्वारा ये जो ऑक्सीजन रहिछि ये ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रॉन रो डेंसिटी टिके बढ़ी जिवो कारण जेहेतु प्लस आई ग्रुप बढ़िवो प्लस आई इफेक्ट जेते बढ़िवो ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेते बढ़िवो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेते बढ़ी जिवो ए जो H आ O भितर थिबा बॉन्डटा सेते स्ट्रांग हे जिवो ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन भितर थिबा बॉन्डटा सेते स्ट्रांग हे जिवो जा द्वारा कोन हबो ना इजीली रिमूव होई परिवनी के H+ आयन आउ थरे मु बुझे दोची जे कौन कहगला ना तुम CH3 प्लस आई ग्रुप जिते बढ़ी बढ़ी जीव प्लस आई ग्रुप जिते बढ़ी बढ़ी जीव कौन हम गुड बढ़िया आंसर त्रिशा एंड श्रावणी प्लस आई ग्रुप जिते बढ़ी बढ़ी जीव तुम ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेते बढ़िबो ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिते बढ़िबो मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम एडी ऑक्सीजन एटम देखि परछो मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन रे जिते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िबो एमानक भितर थिबा बॉन्ड सेते बढ़िबो बॉन्ड रो स्ट्रेंथ तार अर्थ ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन भितर थिबा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी जिवो आ जते स्ट्रांग बॉन्ड हबो H+ टा सेते डेरी रे बाहरिबो सहजरे बाहरिबोनी किंतु एपटे जदि आमे जिबा एपटे कोन होची ना एपटे से भलिया किछि ग्रुप नथिबारु ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन भितर एते स्ट्रांग बॉन्ड हे पारे नाही सो H+ टा इजीली रिमूव हे परिबो ठीक अछि प्लस आई ग्रुप अनुसार ताले आ गोटे क्वेश्चन सो एठी आंसर हबो formic acid is more acidic than acetic acid नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन लेख arrange the followings in the decreasing order of
the decreasing order of acidic strength and melting point. The questions are acetic acid, propanoic acid, butanoic acid, hexanoic acid. ठीक अच्छे, लेट इट बी मेक एज होमवर्क. या को होमवर्क करी रखी था. ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्लास रे हमें नहीं ए क्वेश्चन आंसर कर दो आ गोटे होमवर्क दो. ठीक अच्छे, सो आंसर कौन हम जदि देखा एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड. सबुठ मोर एसिडिक हम एसिटिक एसिड. ताले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबुठ मोर एसिडिक हम एसिटिक एसिड, तापरे प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, हेक्सानोइक. एंड सबुठ लिस्ट हम हेक्सानोइक एसिड. बढ़िया कथा श्रावणी. एंड दिस इज ड्यू टू योर प्लस इफेक्ट. ठीक अच्छे, तापर आम जा एमपी ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर. मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर रे सबुठ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार हम ना हेक्सानोइक एसिड. हेक्सानोइक एसिड पर ब्यूटानोइक एसिड. कारण प्रथमे तुमको इवेन नंबर गुड़ा को बाहर करने को पड़ो. ब्यूटानोइक एसिड पर नॉट प्रोपानोइक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड. तापर आसीबो प्रोपानोइक एसिड. सो प्रोपानोइक एसिड इज लीस्ट. Propanoic acid is least acidic, least has least melting point. Boiling point और melting point भितर टिके डिफरेंस रही है कि जे melting point रे तुम्हारा चेक करिया को पड़िबो इवन आउ ऑड, किंतु boiling point रे किसी चेक करिया दरकार नहीं. ओके, नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन दोची. अरेंज द फॉलोइंग्स. In the decreasing order of acidic strength, solubility, then melting point, then boiling point. माने सब गुड़ा कॉन्सेप्ट एबे हमें कवर करिवा. एंड द थिंग्स आर दैट इज ए होची तुमरो प्रोपानोइक एसिड, बी होची
मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, सी होची हेक्सानोइक एसिड, डी होची टर्शियरी ब्यूटानोइक एसिड, ई होची 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। माने सब गुड़ाक मुंड खटेगा पड़ो, स्ट्रक्चर प्रथम ड्र करिवो, तापर चेक करिवो इवन ऑड सिस्टम, तापर चेक करिवो कोडा क्रिस्टल रे सिमेट्रिकल आछी, कोडा क्रिस्टल रे अनसिमेट्रिकल आछी। यदि सिमेट्रिकल ताहले स्ट्रेंथ अधिका हबो, एमपी र सॉल्युबिलिटी देखिवो कोडे बल्किनेस अधिका आछी, तार सॉल्युबिलिटी कमे जीवो, से अनुसार तुमको चेकआउट करिवो पड़िवो। बॉइलिंग पॉइंट देखिवो पड़िवो कोडी मास अधिका आछी, बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलरली मास ऊपर डिपेंड करे। मेल्ट at see all the things and solve the question in the next class probably आसंता काली 5टा बेले क्लास करी बोली कि मोर गोटे आशा अच्छी। भगवान करंतु मु जल्दी सोई पड़ले जल्दी उठी जीवी, ठीक अच्छे। आ डेरी रे सोईकी जल्दी उठिले मोर हेल्थ पाई इश्यू आसुची, माने चेस्ट पेन हवाक लागुची, मु सेति बाध्य होइकी रिस्क निएनी बेले बेले। इच्छा थिले भी निद भांगी गले भी मु उठेनी, कहीं चेस्ट पेन हुए बेले बेले, जदि सफिशिएंट निद न हुए एमती असुविधा हुए। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।